आज देश के पूर्व कैग नंदलाल सांबियाल की पहली पुस्तक द इनक्रेडिबल पाथ आई वॉक्ड का विमोचन चंडीगढ़ प्रेस क्लब में हुआ। आओ देखते हैं इससे संबंधित एक रिपोर्ट। जो बुक लॉन्च की जा रही है ये मेमोइर्स पर आधारित है। जब हम कहीं काम करते हैं तो बड़े सारे मेमोइर्स होते हैं, हमारे साथ यादें जुड़ी होती हैं और उसको कंपाइल करना हालांकि मुश्किल काम होता है, लेकिन नंदलाल जी ने ये कर दिखाया है और किस तरह से इन्होंने उसको संजो के रखा, संभाल के रखा। ये चीजें हमारे सामने आएंगी जब हम यहाँ इसको करना शुरू करेंगे। आरंभ जो है आज हम सबसे पहले कर रहे हैं ज्योति प्रज्वलन से। लैंप लाइटनिंग के लिए मेरा अनुरोध रहेगा नंदलाल जी कि आप आगे आए। लैंप लाइट I was born in small village in हिमाचल प्रदेश और इन्होंने गवर्नमेंट कॉलेज धर्मशाला से ग्रेजुएशन की है और पोस्ट ग्रेजुएशन जो है पंजाब यूनिवर्सिटी से की और उसके बाद इनकी सिविल सर्विसेज में सिलेक्शन हो गई और बहुत सारे डिफरेंट ऑफिसेज में इन्होंने काम किया है भारत में और अब्रॉड। ही रिटायर्ड एज डायरेक्टर जनरल फ्रॉम द ऑफिस ऑफ CAG ऑफ इंडिया। और इन्होंने वैसे किताबों की जब बात करते हैं तो किताबें तो इन्होंने 3 लिखी, लेकिन ये पहली किताब है जो पब्लिश हुई है और उसका नाम है द इनक्रेडिबल पाथ आई वॉक्ड। बिल्कुल डिफरेंट सा नाम है और बहुत सारी चीजें अविश्वसनीय होती हैं हमारे बीच में और वही हम देखते हैं। और ये किताब लिखने से पहले मैगजीन्स में आर्टिकल्स लिखना, कुछ लिखने की आदत साथ साथ चल रही थी और वही एक जीवंत किताब के रूप में इनके सामने आई है और वो किताब हमारे सामने होगी। और उसके पब्लिशर जो है देश निर्मोही जी हमारे बीच में हैं, उनके लिए भी तालियां बजाते हैं, बहुत से अच्छे से तालियां बजाइए, क्योंकि जब हम बुक लॉन्च कर रहे हैं एक जो राइटर होता है, लेखक होता है, किस कदर उसने मेहनत की होती है और फिर वो दिन आता है जब किताब लॉन्च की जाती है। एक खुशी का दिन होता है राइटर के लिए और फैमिली के लिए और हम यहाँ बीच में हैं तो हमारे लिए भी एक फख्र की बात होती है कि हमारे अपने मित्र जो हैं वो एक बुक लॉन्च कर रहे हैं जो उन्होंने लिखी है और कुछ यादें, मेमोइर्स जो साथ साथ चले, क्या हुआ, कहाँ कहाँ क्या घटित हुआ, देश में क्या हुआ, इन्होंने देश में क्या किया, बाहर गए तो बाहर क्या देखा, क्या डिफरेंस होता है वर्किंग में यहाँ की और बाहर की, ये सारी चीजें तो हमारे बीच में आती है। और ये जो किताब की बात हम करते हैं तो इसमें जो है मेमोइर्स उन्होंने दिए हैं और वो जो कैरियर स्पैन है इनका डिफरेंट, उसमें से डिफरेंट एस्पेक्ट्स को लेकर इन्होंने इस किताब में बड़े अच्छे से उकेरा है और बहुत कुछ दर्शाने की बात की है। और शुरुआत हम करेंगे, मेरा अनुरोध रहेगा नंदलाल जी से भी कि वो बताएं कि आखिर ये किताब जब लिखी और इसमें क्या रिफ्लेक्ट करना चाहते थे, क्या क्या एस्पेक्ट्स उनके मन में थे कि इस किताब ने जन्म लिया। गुड मॉर्निंग लेडीज एंड जेंटलमैन। At the outset, I would like to wish you very happy New Year. Today is 1st January and launch of my first book. As I said that I have written 2-3 books, they are waiting. Now, I would like to offer my gratitude to all of you for having spared your valuable time and come here to grace the occasion. Your presence is very much required and you have very gracefully accepted my invitation and come here for the book launch. The first question would generally come in the minds of people, including my own mind,
that why I have written this book. What prompted me to write this book? What was the reason? The reasons are many, but I would like to share some of them with you people. You know, as Mr. Nirmohi mentioned that I was born and brought up in a very small village in Himachal Pradesh. Yes. When I grew up, I wanted to know about my ancestors. I tried my best to find out the names of my ancestors, but I could go only up to six, seven generations. Beyond that, prior to that, I was not able to know the names of my ancestors. Who were they, where they came from, which places they lived, what profession they adopted. So I was in fact confused and disturbed that why, there was no record. So I tried to find out from my elders, some important people in the society, and whatever records I was able to lay hands on. But again, I'm telling you that I reached only 5 or 6 generations. And prior to that, I have no information. Who were my ancestors? What were their names even? So I therefore decided to write at least about my own life, the journey of my life, for my children, for my grandchildren, for the posterity for that matter, so that they would know how I and people of my generation grew up in their lives. It was of course, I can claim that it was a very difficult time for me, during my childhood, during my education. Today's generation will not be able to imagine the life we spent. Without electricity in the village, no water resources. We had to live on natural water resources only, no water supply, no roads. Nobody educated in the family. That is something I would like to share with you. Nobody was there to guide. And the dreams were very high. I wanted to become something big. Of course, I don't know where I reached, but I wanted to, there was something natural in me. And being a fighter, I survived those circumstances, those conditions, walking 16 kilometers to school, to and fro every day for my schooling. We used to depend upon kerosene lamps for light, natural resources, water sources for water, walk, no road. Today the things are different. That's why I'm saying that today's generation will not be able to imagine how we lived. No road. If you go to my village today, it is totally transformed, different. Every family has a car in the house. That time there was not even a bicycle. Why I'm telling you this story? Because I wanted to tell this story to my children, to my grandchildren, so that they would know. Otherwise, they'll not be able to imagine how we lived. And if they take it as a motivation and develop that fighting spirit in themselves, I think it will be great. Things are totally different, you would have seen. My children, when I was posted in Mumbai, my small daughter, very, very small, she was about 3 years old, 3.5 years old.
we took her to the village and pretty friendly with everybody, and we used to go around with children. One day she came to me and she said, "Papa, यहाँ सब्जी पेड़ के साथ लटकती है, यहाँ के लोग जो है वो बहुत गंदे हैं, गाय का दूध पी लेते हैं निकाल के." So then I realized that I must properly introduce them to the environment, the condition in the village. She's standing there, grown up now, wiser than I am. So that was the time. I don't know, I'm not sure who all will read this book. This is just pieces of my own story, my biography. But I'm sure that people, those who have come here today, they might read the book. And I'm sure that my grandchildren will definitely read the book because I have written it for them. They are very excited. Now, however, this forum gives me a very good opportunity to introduce myself and tell them about my book, share my experiences with them. Actually, the book is not a any great classical work. It's just bits and pieces of my own story, which I have narrated in the books, in this book. Second question comes that what is there in the book? What does it contain? That's also very important, comes in the minds of people, the audience. किताब में लिखा क्या है? That you will know only after reading it. But briefly, I would like to tell you that I have written simply story of my life, how I cracked the problems I faced during my service career, during my education, especially during my service also, it's not always very easy, even for an IS officer. A lot of problems we faced, a lot of things, all different type of people I faced during my career. For example, I was working with the T.N. Sheshan. He was a secretary in the Department of Atomic Energy, and I was deputy secretary reporting directly to him. You can imagine the type of person he was. But he was a great administrator, great person, great bureaucrat, and I learned a lot from him. A tremendous fellow. And many a times I used to just poke. I'm on the habit of, disturbing my colleagues, my seniors, and generally end up in a problem. And when you tease your boss, the T.N. Sheshan, what response you get from him is very obvious. I mentioned in my book. So this journey, which I performed during my whole career, it was really incredible. Everybody is capable of handling problems, capable of fighting and winning these situations. But you have to be very, very strong and fight for it. The next generation, the people, they are now into something else, totally on electronics. Most of them, they don't know the realities of life, the grassroots problems, village life, and the society, how they have to adjust themselves. Very difficult. They are not able to sort of understand, imagine the problems. They have to decide about the future, how they will go about it. So
So there's a lot of difference. What I'm saying is that when we were small children, when we were studying, we got into service. Now the things are totally different. I don't know really that how and how they will survive in the future, because some of them are very bright, very good in studies, but other problems, the society, when we were studying, we faced a lot of psychological and social impediments, a lot of them. But things are different today now. We were so scared of our parents, not even able to talk to them. But now we are not able to talk to our children. They come out with so many questions, so many arguments, and sometimes we are not able to answer their questions. But our times were difficult. So I have in my book, I have mentioned a lot of things, my experiences in India and abroad. I did a number of stints in the United Nations. And those things also I have mentioned in my book. I have mentioned about what I've seen abroad, what I've seen in India, and why? Because I'm in the habit of keeping notes. So those notes help me a lot. Dear friends, now I think when you make me stand the dais, it's very difficult to take me out of the you'll not be able to. But anyway, that is my habit. And I would like to again thank you for being here. Again, Happy New Year. Wish you best of everything in 2025. कि आपने शुरुआत की घर से परिवार के बारे में जानने की, और धीरे धीरे बहुत कुछ हम जानने लगते हैं, लेकिन इस किताब के बारे में भी हम जानना चाहते हैं और जानेंगे। लेकिन अभी वक्त है बुक लॉन्च का, और ये बड़ा डिफरेंट तरीके से हम आज बुक लॉन्च कर रहे हैं। नंदलाल जी की पोतियां यहाँ हैं, शानिया और अनायशा, ये मंच पर आएंगी। बुक लॉन्च इनके हाथों, और हमारे साथ में जो ये सीधा देखिए मैम, ये सीधा देखिए, लुक एट वन मोर सर, और बुक नहीं, वन मोर, थैंक यू। इधर मैम Thank you for coming here today to my Dadu's book launch. My name is Anaisha. Me and my sister Shania have come from Harare for this event. We are enjoying our stay and hope you are also enjoying. I would like you to read this book and enjoy. Please have your lunch before you go. We have come from Harare, Zimbabwe. My Dadu's book is about the incredible journey of his life and the many challenges he faced. I am personally very excited to read the book, and I am sure so are many of you. I am very proud as his granddaughter for his many accomplishments, one of them being this book. Happy New Year. देखिए, मेरा नाम नंद लाल साम्याल है। ये बुक मैंने, जैसे मैंने बताया, कि सोच के लिखी है कि आगे वाली जनरेशन्स के लिए कुछ इससे मोटिवेशन मिलेगा। अगर वो चाहें तो इसमें से कुछ शिक्षा ले सकते हैं। बाकी बुक के बारे में तो जब आप बुक पढ़ेंगे अच्छी तरह से, तभी आपको पता लगेगा कि बुक में लिखा क्या है। बाकी इतना मुझे मोटिवेशन कहाँ से मिला, हाँ, उधर देखिए, और मैंने क्यों बुक लिखी, मैं आपको एक थोड़ी सी ब्रीफ में बताता हूँ। मैं कीनिया में नायरोबी में एक यूएन असाइनमेंट कर रहा था, तो मैं मतलब बुक वगैरह में शौक़ रखता हूँ और बुक स्टोर में जाता रहता हूँ। तो वहाँ मैं गया तो मुझे एक ऑटोबायोग्राफी मिली कैरिन बिलिक्सन की।
वो डेनमार्क की रहने वाली लेडी थी। 1914 से लेकर 1932 तक वो कीनिया में रही और वो कॉफ़ी प्लांटेशन के सिलसिले में आई थी। 17 साल वहाँ रही और उसकी कॉफ़ी प्लांटेशन में फेल हो गई। शी वेंट बैक टू डेनमार्क, लॉस्ट एवरीथिंग, सब कुछ उसका बिक गया, चली गई वापस। लेकिन उसके जाने के बाद उसने सोचा कि यार मैंने इतना 17 साल का टाइम जो यहाँ बिताया है, यहाँ बर्बाद किया है, इसमें मैं लिखूँ कुछ कि मेरा एक्सपीरियंस क्या था। उसने वो किताब लिखी, उस किताब का नाम है आउट ऑफ अफ्रीका। उस पर फिर एक मूवी बनी, हॉलीवुड में बनाई मूवी, और उस मूवी को 6 ऑस्कर्स मिले हैं। कभी समय लगे तो पढ़ना। मैंने ये सोचा कि अगर वो लेडी फेल हो, वहाँ पे फेल हुई, सारा कुछ उसने बर्बाद कर दिया, वो अगर एक किताब लिख सकती है और वो किताब इस मुकाम पर तक पहुँच सकती है, तो मैं अपने बारे में क्यों नहीं लिखूँ। तो मैंने अपने बारे में ये किताब लिखी ताकि मेरे बहुत सारे लोगों को पता नहीं है मेरे बारे में, मेरे बच्चों को पता नहीं होगा, मेरे ग्रैंड चिल्ड्रन को पता नहीं होगा, तो इसलिए ये किताब लिखी मैंने। ਤੁਸੀਂ ਸੀਏਜੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ, ਉਸ ਦੀਆਂ ਵੀ ਯਾਦਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ? हाँ जी, बढ़िया यादा ने जी। सीएजी नाल था, मैं सारी जिंदगी उस डिपार्टमेंट से काम किया है। ये कंफर्टेबल पंजाबी वो आते नहीं ज़्यादा, जो आप बोलते जाओ जिसमें भी बोलना है। और सीएजी तो मैं मेरा पेरेंट डिपार्टमेंट था और बहुत सारे एक्साइटिंग एक्सपीरियंसेस हैं जो मैंने इसमें मेंशन किए हैं। मैं पंजाब में 6 साल रहा हूँ अकाउंटेंट जनरल, तो उसको भी मैंने लिखा, पंजाब के बारे में मैंने लिखा है। बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें रही हैं। मैं आपको एक जुमला सुनाता हूँ। जब मैं पंजाब में चंडीगढ़ में था तो यहाँ क्या हुआ कि हमारे दफ्तर में कोई 3-4 हज़ार आदमी काम करते थे, उनकी वाइफ्स काम करती थी, बच्चों को क्रिच में छोड़ते थे वो, तो लेडीज़ परेशान रहती थी। मैंने क्रिच खोल दी दफ्तर में ही, वो आज भी चल रही है। और अब देखिए इसमें ऐसा होता है कि अगर लेडीज़ के बच्चे उनके सामने वहाँ पे केस में हैं तो उनको टेंशन नहीं है। तो ये जो प्रोग्राम्स होते हैं ना, इसमें आपकी ऑर्गेनाइजेशन है उसको फ़ायदा होता है, ये नहीं उनको फ़ायदा हो रहा है। इस तरह की चीज़ें बहुत सारी मैंने की जो किताब में मेंशन सर, अपने जीवन पे आपने ये बुक लिखी है, आखिर लोगों को अपने जीवन से क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैं अपने लोगों को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि भाई ज़िंदगी कोई आसान चीज़ नहीं है, सबके लिए मुश्किल तो है, लेकिन अगर आप फाइट करें तो किसी भी सिचुएशन को जीत सकते हैं। ये अंग्रेजी की पहली किताब छपी है। दरअसल इनसे परिचय हुआ, पहले तो इनसे पर्सनल जुड़ाव था। उन्होंने अपने बारे में, ये बेसिकली आध्यात्मिक आदमी है और मेरी थोड़ी आध्यात्मिक रुचि है। समाज सेवा में सामाजिक कार्यक्रम इनके काफी रहते हैं। पर्यावरण के प्रति उनका जो मेन लगाव है उसने मुझे आकर्षित किया। उनका ये हर साल 100 पेड़ लगा, 100 से ज़्यादा। उनका अपना बगीचा है और उनका ऑर्गेनिक खेती में काफ़ी इंटरेस्ट है। ये पर्सनल हमारा फिल्म के संस्मरण जाने, इनकी कहानियाँ सुनी, हिंदी में किताब मैंने छापी, इनकी कहानियाँ हैं बहुत खूबसूरत, एक बहुत अच्छे कहानी टेलर है। और इस किताब में जो इनके संस्मरण है पूरे देश में विदेश मानसरोवर के, मैं समझता हूँ कि वो एक सिर्फ एक तो होता है ना कि पत्रकारिता होती है, आपने जो देखा उसमें एक अपनी क्रिएटिविटी है, ढंग से कहने का एक अपना अंदाज है, भाषा बहुत अच्छी है।
बहुत अच्छे ढंग से लिखा है। जैसे आप इस किताब को पढ़ेंगे लगेंगे कि आप एक नावल पढ़ रहे हैं, कि ये कोई रिपोर्ट है या ये। मैंने इनको जाना कि ये एक लेखक तो है ही, चित्रकार बहुत, फोटोग्राफर्स को। इसमें हमने लगभग 10-35 फोटोग्राफ्स लिए हैं और 300-400 फोटोग्राफ्स हैं इनके पास। मैंने इनको कहा कि आप इसके एक एग्जीबिशन बड़े फोटोग्राफ सच्चाई, और ये किताब जब आपके सामने है, मैं इसके बारे में ज़्यादा नहीं बोल पाऊँगा। आप पढ़ेंगे, देखेंगे तो आपको लगेगा। और मुझे भी गर्व है इस किताब को छापने। शुरुआत मैंने यहाँ से की। इसी बात पर जोरदार तालियां होनी चाहिए कि इन्हें फख्र है। अगर पब्लिशर को फख्र है इस किताब को छापने में, जबकि वो हिंदी के पब्लिशर है, इंग्लिश की बुक उन्होंने छापी, ये पहली किताब है और इस पर इस तरह की टिप्पणी साधारण नहीं है। एक बात और कहना जी, मैंने लगभग 600 करीब किताबें छापी, बड़े बड़े लेखकों, उनके विमोचन भी हुए, लोकार्पण भी हुए, बुक लॉन्च। लेकिन आज का जो ये पहला है, पहला है कि बच्चों के हाथ से इसका लोकार्पण हुआ। ये मेरे को बहुत खुशी है और ये मैंने कहीं नहीं देखा। तो इससे ये होता है कि हम बच्चों के मन में भी एक वो रहता है, याद रखेंगे जब बड़ी होंगी बच्चे कि हमने किताब, तो किताब के प्रति उनका प्रेम और बढ़े। ये बहुत यूनिक इन्होंने वो किया, उसके लिए बहुत ही आभार इनका। और आप सबको नए वर्ष की शुभकामनाएं। किताब Special thanks to the Press Club of India and Chandigarh for giving us this platform to launch our book. Would like to thank each and every one of you who's present here, has come, taken out time today to come here, and would also like to thank people who couldn't come here but send their wishes and blessings. Each one of you holds a very special place in our hearts, so thank you very much for taking out time and coming here. It means a lot to us. This opportunity to thank you, Baba, and I think the words also reflect, or that the spirit at least reflects Gudiya and Shikha as well. So I'll try. For some reason, it's not easy to thank fathers. It's easy to do that with mothers, but Papa, while you've written this book, I know where your journey began from, and as much as you would have tried to write this book, I don't think it would have died. It's possible to do justice to the journey that you've had. It's been an incredible journey, and I'm sure words will fall short. Very few people start from where you did and where you have reached. I don't know of anyone who has traversed such a long journey. People get a head start in their life, you did not. And in fact, I would say you started from behind the line. So if me and Gudiya are able to even reach 50% of what you have achieved, I think that would be I would be incredibly proud of myself. Like I said, I should have gotten this straight. But ladies and gentlemen, my father did not inherit, he was not born with a silver spoon. He did not achieve overnight success. And he did not have people to help him. And he's a true embodiment of what you call a self-made man. A lot of people have been dependent on him, and he's made a lot of people.
He's helped a lot of people, he's made a lot of people, and there's a saying that goes that birds which fly solo have the strongest wings. And I can tell you that you do have the strongest wings. A lot of people have been dependent on you, and you made all of them proud. And whatever he has achieved, I think is truly remarkable, and I genuinely believe that is the most well deserved. Uh, you mentioned in your speech about goals and dreams. You mentioned that you had goals in life when you started. Dreams come very easy and very cheap. It's very easy to dream, but goals have a price to pay. And I know you have paid a price for the goals that you have achieved, and you paid a price for where you have reached today. So, we are enjoying the fruits of the labor. We are enjoying while you pay the price. So, on behalf of the family, I would sincerely like to thank you. I would like to thank you for everything that you have done. Most of it has been done silently. So, thanks a lot for that. Start of a new year, so I wish you, Papa, that you have a wonderful 2025. You are able to, in this year, I hope you win the battles that you are fighting internally, like all of us, and you come out strong. And from the rest of the audience, I hope that this book is just the trailer, and the script starts from the next book. So we're waiting for the next book, all of us. Yeah. So now I think I should speak. एक दूसरे के बिना चलती नहीं है और एक दूसरे के साथ बनती भी नहीं है बट मम्मा पिलर रहे हैं जिसकी वजह से पापा को वो स्ट्रेंथ मिली कि आगे जाएं, आगे बढ़ें, रिस्क ले सकें, उनका फुल सपोर्ट रहा है। तो इन दोनों की जो जोड़ी है या जो इन दोनों का जो जुगलबंदी रही है मेरी लाइफ में बहुत इम्पैक्टफुल रही है। I am able to be what I am today. So thank you, Papa. Thank you, Mama, and my bhabhi and the grandchildren and everybody of my family and extended family. Happy New Year! And thank you very much for coming. And like Anisha said, lunch करके जाइएगा. So I would request कि my bhabhi also says something. Lunch. And secondly, I am neither a good writer nor a good orator like Papa. So let me keep it short and simple. So Papa, I would really like to congratulate you on behalf of all of us. We really all are very proud of you and your accomplishments. This is yet another feather on your cap, and I'm sure that there will be many, many more to come. You truly are an inspiration for all of us. Papa, you've always surprised me time and again with your depth of knowledge about almost everything under the sun. But what has truly amazed me is that you always have a story to tell or an anecdote to share. So I'm really looking forward to reading this book because I know for sure that it will be equally engaging and exciting just as your stories are. So wishing you really all the best, and we all love you a lot. Thanks for watching. Please like, share and subscribe my channel.